It's a big day. The state of Madhya Pradesh votes today for all of its 230 seats, while Chhattisgarh is voting for 70 out of its 90 seats. The voting started, and we have reporters on the ground to bring us the latest news in Madhya Pradesh. It is the ultimate test for the double-engine Sarkar of the BJP, with Shivraj eyeing a fifth term. Let's have a look first at the numbers, and then we go right across to our reporters who are joining us live from some of the key seats and key constituencies. This is going to be a long conversation today. Lots to talk about because we're just 5 months away from the general elections. But what were the numbers last time around in Madhya Pradesh? My colleague Riya Girdhar joins us on the broadcast. Riya, over to you. If we can begin by explaining to our viewers what the election results were last time around and what truly happened. What did the voters want? Well, thank you, Devika. Let's quickly take a look at the numbers now. So, starting with the seat check comparison from 2013 to 2018, with Congress having 58 in 2013 and 114 seats in 2018, and BJP with a massive 165 seats in 2013, with again 109 seats in 2018, with SP standing at 0 and 1 seat for SP in 2018 and 4 seats for BSP in 2013, with a number of 2 in 2018, and others standing at 3 and 4 in 2013 versus 2018 respectively. And this stands at total seats of 230. And now let's quickly take a look at the 2019 Lok Sabha results, with Congress winning 1 seat out of the 29 seats, BJP garnering a massive number of 28, and then SP again standing at 0 with BSP and others. Now these are the numbers of 2019. Now let's quickly take a look at the Madhya Pradesh 2018 versus 2019 Lok Sabha poll numbers, with Congress standing at 114 and 1 in 2019, 109 for BJP, 109 in 2018 and 28 seats in 2019. Now SP standing at 1 and 0 respectively in 2018 and 2019, with BSP again at 2 in 2018 and 0 at 2019, with others in fact getting a bit ahead with 4 in 2018. Now let's quickly take a look at the 2018 vote share, with SP standing at a 1.30%. Meanwhile, BJP with a massive number of 41.02%. Congress standing slightly low with 40.89%, with BSP and SP standing together with 1.30% and 5.01%, with others in fact crossing a bit further with 10.43%. These are the total votes. The total votes standing at 38 crore, and I mean it shows a massive competition between the parties. Let's quickly take a look at the 2018 seat share, with total seats standing at 230 and halfway mark in 116. Congress having 114 seats in their pocket, with BJP a bit below at 109. SP and BSP 1 and 2 respectively, with others at 4. Now you can clearly see Congress sort of headed ahead with the numbers last time. Over to you, Devika. Okay, very interesting. Of course, Riya, last time around it was the Congress party, remember, that took the majority of the seats in Madhya Pradesh, but the government did fall midway and then the BJP came to power. So will the BJP manage now to keep the voters swayed, to keep the voters persuaded? I take this conversation forward. Several guests joining us this morning: Dr. Pooja Tripathi of the Congress, Himanshu Bhatt, political analyst, D.K. Tiwari, political analyst, and K.C. Sharma of the BJP also joining us on the broadcast. Let me begin with Dr. Pooja Tripathi. Dr. Tripathi, has the Congress party done enough in Madhya Pradesh to sway the voters? Dr. Tripathi, can you hear me? Yeah, we can.
Yes, go ahead, ma'am. Has the Congress party done enough in Madhya Pradesh to remind the voters that it was, in fact, the voters' choice in 2018? Definitely, it has done enough. We have run a very dedicated campaign against the 50% commission sarkar of Bharatiya Janata Party. What we see in Madhya Pradesh, there has been this what Rahul Gandhi has put in his Twitter, and there's been a tufan of Congress. We have our Karyakartas were on ground, our ticket distribution was ably done. We ran a very pro-people campaign. We delivered a very good manifesto. Also, over the course of campaign, there has been numerous scam revelations. Narendra Thomas' son was revealed in a videos asking for some 10,000 crores and indulging in ganja kheti and all that. So I think Congress ran a very dedicated campaign. People are fed up with Shivraj Singh government's 50% commission, corruption and scam governance. What we see in Madhya Pradesh is a huge atrocity on women, term of women. I'll speak from women. Every 55 minutes, one woman is missing in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh boasts of this grave figure of the biggest missing women in country. Then there this atrocities on Dalit, be it in Nemawar, be it Datia, be it Jabalpur. Even BJP leaders have been accused of creating havoc and violence on Dalit girls. When it comes to malnutrition, Madhya Pradesh again was the biggest number at 57,000. There has been series of scam, Vyapam scam, Patwari scam, this Mahakal scam, everywhere scam. It has been ridden with scams. It said that the last few years of Shivraj Singh government has been ridden with 250 scams. Okay. So I think what Madhya Pradesh needs is a change. Madhya Pradesh needs people to be brought into the center of politics. Madhya Pradesh needs people to be brought into the center of developmental politics. It needs industrialization. There are 40 lakh registered unemployment and only 21, I'm not saying this is Times of India report, only 21 people got employment. Madhya Pradesh needs employment. Madhya Pradesh needs favor from the backbreaking inflation. Madhya Pradesh needs exams to be conducted properly. There's been series of scams in all the recruitment exams. Madhya Pradesh needs a health-centered policy where malnourishment is addressed at its foot. Madhya Pradesh needs law and order. Madhya Pradesh needs a government that keeps people at the center stage of politics and delivers their promises. So whatever we have promised, we have delivered in Karnataka, we have delivered in Himachal, and I'm sure we have delivered exceedingly well in Chhattisgarh and Rajasthan. And I'm sure on 3rd December, I'll come back to your show and we'll clean sweep the Madhya Pradesh state. Okay, of course, all eyes, everybody is waiting for December the 3rd. We move into some breaking news coming in. Madhya Pradesh State Congress President and election candidate from the Chhindwara constituency, Kamal Nath, has alleged that the BJP has been distributing alcohol and money the night before polling was due to start. The Congress leader has said that he has video evidence of the same. Kamal Nath has made these allegations before casting his votes in the elections. Let's quickly listen in. पूरा प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूं। मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 44 साल से लड़ रहा हूं। कितने वोटों से जीत का आपको अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी। All right, so there you heard it. Let's quickly move into some breaking news. More breaking news coming in. More breaking news coming in. Let's flash that on our screens. Breaking news coming in. Madhya Pradesh. As Madhya Pradesh goes for polls, Chief Minister of the state, Shivraj Singh Chauhan, has reached
Jayat to visit a temple before voting. Visuals on your screens of Shivraj Singh Chauhan paying a visit to Jayat to a temple ahead of casting his vote in the Madhya Pradesh polls. There are visuals right there on your screens. Let's put them out on the screen. Now we go across to my colleague Chetan Seth joining us live from capital city Bhopal. Chetan, if you can just take our viewers through what's happening right now, where exactly are you? Are there people where you are currently? What is the mood in the morning for the voters? Are they pouring out? Is it slow paced in Bhopal right now? बिल्कुल देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई है और मतदान से पहले जब कमलनाथ अपने घर से बाहर निकले और सबसे पहले उन्होंने मंदिर पर माथा टेका। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी शराब और पैसे बंटवा रही है। तो एक बयान उन्होंने दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। इसके साथ ही उन्होंने युवा वोटरों को कहा है कि मध्य प्रदेश का नौजवान युवा वोटर पहली बार मतदान करेगा। उनसे भी उन्होंने अपील की है कि वो सही ढंग से इस बार मतदान करें। लेकिन उन्होंने दावा इस बार नहीं किया। अमूमन कांग्रेस हमेशा दावा करती रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी, लेकिन आज कमलनाथ से जब पूछा गया कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी एक मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। इसके साथ ही तो कमलनाथ बयान देने के बाद अपने मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद वोट डालने के लिए वो रवाना हो गए। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वोट डालने के लिए रवाना होगा। सबसे पहले वो अपने गांव में कुल देवता जैत हनुमान मंदिर पर पहुंचे, वहां पर मत्था टेका। उसके बाद दुर्गा माँ के मंदिर में वो पहुंचे, वहां पर मत्था टेका। अब वो नर्मदा मैया के घाट पर जा रहे हैं, वहां पर नर्मदा मैया के जो है आशीर्वाद लेकर उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह, दोनों बेटे कार्तिकेय चौहान और तो मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला बेहद रोचक है। वो जिस तरीके से चुनावी सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने यहाँ पर जो तमाम योजना है और लाडली बहना योजना, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे चेहरा लगकर चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे, उसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के काल में 15 महीने में जो कमलनाथ के द्वारा काम किए गए थे उन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में है। और आज मतदान शुरू हो गया है और 5 करोड़ 60 लाख मध्य प्रदेश के जो मतदाता हैं वो आज वोट डालते नजर आएंगे। आखिरकार 225 से ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं, 230 कांग्रेस ने अपने विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और बीजेपी ने उतारे हैं। इन जो प्रत्याशियों का भविष्य क्या होगा, इनका भविष्य आज ईवीएम में कैद होता हुआ नजर आएगा। Okay, Chetan, where exactly, if there are some people around you, we'd love to hear some voices of the early risers, early voters there. But let's quickly go across to KC Sharma of the BJP as well. KC Sharma, you've heard what the Congress party has had to say. Big allegations are being made by Kamal Nath. He says that liquor and money was being distributed by the BJP as a last-ditch effort in Madhya Pradesh. How does the BJP respond? Namaskar. Congress can only excuse. Congress can only make the promises, but they never deliver. They made a big promises in Himachal. They haven't completed even one promise. They were saying like they'll buy a cow dung 2 rupees per kg, but till now they haven't bought even a 1 kg cow dung. They were saying they'll implement the old pension, but they could not even pay the salary. How they will be paying the pension? So they just make the big tall promises, just like a Kejriwal. They learn something from the Kejriwal. Just make a promise, try to make the people fool, and once they form the government, then forget it. So now the people of the Madhya Pradesh and Chhattisgarh understand it. So they are not going to vote the Congress, and they also understand what Prime Minister Modi ji is doing for them. Prime Minister Modi ji providing good health through the Ayushman card. Prime Minister Modi ji are providing good care to the women. Now everybody is having a toilet in their house. Prime Minister Modi ji is providing the support to the farmers by PM Kisan continuously, and PM Narendra Modi ji is giving the support to the youth as well as the women entrepreneurs. Prime Minister Modi ji has the special schemes for the SC, ST, OBC. Prime Minister Modi ji is having a special schemes for the tribes. Prime Minister Modi ji is having a special schemes for the workers so that they can have a work near to their home, near to their town, near to their city. So that is making a difference. Now there is a one additional caste, that is the caste of the beneficiary. So beneficiary want to vote for the BJP,
and they are with the BJP. That is why Congress is not a confident. And you can see from the comment from the Kamal Nath ji, he's not confident. That's why he's not giving any number. Otherwise, he would have they are coming in a majority or they are winning by 2/3 majority, something. So he's not confident. He know Bharatiya Janata Party is performing very well in Madhya Pradesh. In Chhattisgarh, they ruin everything. They fix the commission and everything. They haven't left anything without the commission. Corruption, appeasement politics, conversion has been increased significantly into the Chhattisgarh. So Chhattisgarh people realize before Congress government, Bharatiya Janata Party government was far better. So I'm sure in Chhattisgarh and Madhya Pradesh, people are voting for the Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party will form the government, and again, double engine Sarkar in Chhattisgarh and Madhya Pradesh will serve the people in better way. Okay, Thank all you. right. Let me bring in, stay on with us, KC Sharma, as well as, of course, Pooja Tripathi. But let me bring in Himanshu Bhatt and DK Giri into the conversation. Himanshu Bhatt, has the Congress party done enough to remind Madhya Pradesh that, in fact, last time around, the state did vote the Congress into power? Yes, they did vote Congress into power, all right. But it is their own doing, which split the party. It's very simple as that. And in real politics sense, in real politics of today, one cannot be complacent. See, on one side, you have an anti-incumbency of 15, 20 years. On the other side, you have a party which is divisive. And see, actually, in Madhya Pradesh, I would say, they do have a couple of leaders. But then, still they keep on fighting. See, what is happening in Madhya Pradesh and Chhattisgarh? Chhattisgarh is a little peculiar, but in Madhya Pradesh, I would very clearly say it's going to go down to the wire. It's going to go down to the wire. But I do understand. On one side, a party keeps on saying Madhya Pradesh needs this, Madhya Pradesh needs that. But what is your game plan? What is your plan after you come to power? What will you do? Where you will come up with only doles and doles and doles. See, that is what the problem of Madhya Pradesh voter is. On one side, you have a leader who shifts to soft Hindutva, starts hopping around the temples. On the other side, you have a hardcore who goes on to the temples everywhere. On one side, they give a roadmap. On the other side, you want this, you want that, by actual and real politics, a common man spends his life with his hard-earned money not to listen to your rhetorics. See, today is a voting day. It's very, very difficult and it's not fair for anyone to comment that we will win, this will win and that will win. No, I'm not going to do that. All I'm going to say is, wait till 3rd of December, but what will happen as a result is, something? I'll give you an incident. Some few months back, there was a Baba who was in Surat. Someone came from England to meet the Baba. And after that, that Baba started doing sabhas for Kamal Nath on one side. Then something happened. Baba went to the other side. What is this? Don't people see it? People do understand everything. See, for them, religion is important, all right. But at the same time, for them to live in dignity is also very important. You cannot be fooling them time and again. Yes, there might be a scheme which might be going on, which will take few years longer. It can happen. It's happened in every government. Be it Congress, be it BJP, that is not an issue. But then the face of credibility. The face of credibility, where it comes, people rely on them and people believe in them. And that's why BJP probably has not come up with a state level face this time. They say we will go with the face of Narendra Bhai Modi. But Himanshu, but okay, let me bring in DK Giri into the conversation. DK Giri, is that the strategy that really then needs to continue working in the state? Okay, before I go to DK Giri, we have Vaibhav Gupta joining us from Bhopal right now. My colleague Vaibhav,
if you can just take our viewers through where is it that you're standing, what really is the pulse right now, what is it that you're picking up from the ground? I'm assuming you're close to some voting booth. What's happening, because voting has started? Are people coming in before they end up going for their work today? हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान होने की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से ही जो वोटर्स थे वो उनकी लाइन लगने की शुरुआत हो चुकी थी। तो स्पष्ट है कि कितना उत्साह है मध्य प्रदेश के वोटरों में मतदान को लेकर। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से हमने कांग्रेस का कैंपेन देखा, बीजेपी का कैंपेन देखा, वोटर से बात करेंगे। मतदान किया है अभी आपने, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। अब किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी कई बार वोट दिए हैं, अब तक की जो उम्मीदें पूरी अब क्या चाहते हैं? थोड़ा बदलाव, 2 बार मामलों को जिताया, 2 बार कांग्रेस। अभी कुछ और वोटर भी हमारे साथ हैं, पहले तो वो निशान दिखाइए अगर वोट डाल दिया हो आपने। काफी हमारे साथ हैं, पहले तो वो निशान दिखाइए अगर वोट डाल दिया हो आपने। तो आप ये देख सकते हैं कि निशान है। कैसा महसूस कर रहे हैं वोट डाल के और क्या चाहते हैं? अच्छा ही चाहते हैं। आप कांग्रेस आना चाहिए इस बार, पंजे पे वोट डाला है जी। बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वोटर्स को सुनना। कुछ और भी वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्ते बाबू जी, वोट डाला है, क्या कहेंगे? अब खुशी वाली बात है, अच्छी बात है वोटिंग करना, और ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है तो अच्छा है, हर नागरिक को वोट डालना चाहिए। Vaibhav, let's ask the people what are they voting for. Vaibhav, of course voting is your right, everybody should practice it. Let's ask the people some pointed questions about what is it that they're voting for. Vaibhav, किस मुद्दे पे वोट कर रहा है मध्य प्रदेश आज? ये भी कमियां हैं जो पूरी हो जाए, विकास हो और कानून व्यवस्था सही रहे, भाई यही चाहते हैं और क्या चाहेंगे। भाई बिल्कुल, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। कुछ और भी वोटर्स हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ और वोटर से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, किस मुद्दे को लेकर इस बार मतदान किया जा रहा है? सर अभी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ और भी हम वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह से ही जो वोटर्स हैं उनकी लाइन लगने की शुरुआत हो गई थी। आप बताएंगे किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है? बता, महंगाई को लेकर वोट डाला है और तो कुछ नहीं है, थोड़ी सस्ता हो जाए सब चीजें, बस यही सोच कर डाला है। बिल्कुल, यहाँ पर महंगाई की बात भी की जा रही है, कानून व्यवस्था की भी यहाँ पर बात की जा रही है। क्या मुद्दा था, क्या मुद्दा सोचकर आपने वोट डाला है? साहब हमने तो सरकार की तरफ से डाल दिया, अब जो होएगा वो मालिक जाने। नहीं, कोई तो मुद्दा होगा जैसा आप वोट डालने आए। महंगाई की बात की जा रही है, महंगाई भी थोड़ा सा परेशानी है, इस कारण और कुछ नहीं है साहब, बाकी सब ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर महंगाई की भी बात की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था की बात भी की जा रही है। हम कुछ और भी जो लोग हैं उनसे खड़े हुए, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार का इलेक्शन को लेकर, जो मतदान हो रहा है उसको लेकर आप भी वोट डालेंगे? जी बताइए ना किसको आप वोट दोगे? क्या मुद्दा क्या है, क्या मुद्दे पर वोट दोगे आप, क्या सोच के वोट दोगे? कि नहीं उनसे बदलाव के लिए देंगे, बदलाव के लिए। कारण जैसे अब उनको हो गया काफी टाइम, अब किसी नए को मौका देना चाहिए ताकि वो आप सीख ले, इस वजह से। तो क्या कमी रह गई जैसे आप बदलाव की बात कर रहे हैं? कमी तो नहीं रह गई है, ज्यादा वो नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी बदलाव तो जरूरी है। 15 साल उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आप वोट दे के आई हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार वोट को लेकर? अभी नहीं डाले हैं भैया, अभी नहीं डाले हैं। चलिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं, महंगाई की बात भी कर रहे हैं, बदलाव की बात भी कर रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह 7 बजे से ही ये पुराने शहर का एक बूथ है भोपाल का, जहाँ पर सुबह 7 बजे से ही, मतलब निर्वाचन आयोग ने जो कहा था कि हमको प्रतिशत बढ़ाना है मतदान का, कहीं ना कहीं उसका असर भी दिख रहा है। और लोग जो कह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात भी यहाँ पर वोटर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। Okay, all right. I will come back to you just a moment. We're being joined by Ajay Gohil from Raisen in Madhya Pradesh as well. Ajay, take it away. हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाइए अभी जहां आप खड़े हैं रायसेन में क्या चल रहा है। कोशिश करते हैं कि अगर कोई लोग सुबह सुबह वोट डालने आए हैं अपनी नौकरी पे जाने से पहले, तो उनसे भी बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि वो आज किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं।
बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इस समय रायसेन में भी मतदान चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश की तरह। और इस समय हम रायसेन के कलेक्ट्रेट कॉलोनी स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकारी और वोट मतदाताओं की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और इस कैंपस के अंदर 4 मतदान केंद्र क्रमांक बनाए गए हैं, 123, 124, 125 और 126। हमारे साथ एक मतदाता आए हैं अभी मत का प्रयोग करके, आप उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से क्या संदेश देना चाहता हूँ? कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और मनपसंद सरकार चुनने के लिए बढ़ चढ़कर 100% मतदान करना चाहिए। सर, आप भी अभी वोट डाल कर आए, उंगली दिखाइए प्लीज, और आम जनता से क्या कहेंगे? यही चाहते हैं कि जो सरकार कार्य कर रही है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसके लिए बहुमत से फिर से चुने। बहुमत से फिर से सुने जो सरकार कार्य कर रही है। हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, पहली बार मतदान करने का अनुभव कैसा रहा और आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? सीधी तस्वीरें आप आम जनता को दे रहे हैं, सीधा संदेश दे रहे हैं आप। सर, मेरा ये कहना है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। और सभी युवाओं से अपील है कि किसी की बहकावे में ना आकर राष्ट्रहित में वोट दें। राष्ट्रहित में वोट दें। हमारे साथ यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारी भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, किस प्रकार के यहाँ पर मतदान केंद्र किस प्रकार के बनाए गए? जैसे ये आदर्श मतदान केंद्र है, बताया जा रहा है एक महिलाओं के लिए भी अलग से मतदान केंद्र बनाया। कितने मतदान केंद्र आदर्श बनाए गए? अभी पूरे जिले में आदर्श मतदान केंद्र एक हमने बनाया है कलेक्ट्रेट में, और महिला मतदान केंद्र हमारे 5 हैं। और आदर्श मतदान केंद्र का मतलब ही है कि उसमें हम हर तरह की सुविधा हमारे वोटर को दे रहे हैं, जिसमें दिव्यांग के लिए हमारे पास व्हील चेयर है, हेल्प डेस्क हमने बनाई है, और जो महिलाएं हैं उनके बैठने का स्थान, प्रतीक्षा केंद्र भी बनाया है। अगर ज्यादा भीड़ होती है तो उन्हें बैठने की सुविधा। सर, आप भी अभी मत कर आए, अपने मत का प्रयोग करके आए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी नागरिकों से यही आग्रह है कि मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान जरूर करें। चुनाव आयोग द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की है और रायसेन नगर पालिका द्वारा भी रायसेन नगर में आदर्श मतदान केंद्र और महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र, बाकी जो भी तमाम मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर काफी अच्छी व्यवस्था है। और इस बार किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना मतदाताओं को नहीं करना पड़ रहा है। और सभी से यही आग्रह है कि अपनी मनपसंद की सरकार चुनने के लिए मतदान जरूर करें, क्योंकि इस महापर्व में सभी मतदाताओं की आहुति बहुत जरूरी है। और सभी से यही आग्रह है कि हमारे साथ एक और मतदाता आए हैं मत करके। सर, युवा मतदाता हैं आप सरकार चुनने जाते, वोट डालने जाते, जब क्या अनुभव करते, कैसी सरकार आप देखना चाहेंगे? बहुत सबसे पहले तो रोजगार पे मैं बात करूंगा। जैसे मैं खुद मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, रायसेन जिले का निवासी हूँ, और मुझे नौकरी करने गुड़गांव जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। अभी रात में ही मैं गुड़गांव में ही था, सुबह 4 बजे मेरी ट्रेन आई। सिर्फ एक वोट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा हो सकता है, शायद एक वोट से अगर रोजगार मिल रहा है तो फिर मेरा एक वोट बहुत कीमती है। तो चूंकि जब आप वोट करने आए, गुड़गांव से आप आए हैं, आपके मन में सरकार से क्या उम्मीदें हैं? कैसी सरकार होना चाहिए? सरकार ऐसी होना चाहिए, जैसे अगर मुझे मतलब अगर मैं शिक्षित हूँ और बेरोजगार हूँ तो ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं शिक्षित हूँ तो मध्य प्रदेश में ही रोजगार के साधन होने चाहिए, ताकि मेरे जैसे और छोटे भाई बहन जो हैं उनको बाहर जाके बेंगलोर गुड़गांव जाके जॉब ना करनी पड़े। तो देख सकते हैं आप, मेरे जैसे जो छोटे भाई बहन हैं वो, और देखिए हमारे साथ एक और मतदाता आए हैं मत का प्रयोग करके। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि मत का प्रयोग करके आए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? आप चूंकि एक सरकारी कर्मचारी भी हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको वोट डाल के आए, लेकिन आप कैसी सरकार चाहते हैं कि जो आम जनता का ख्याल रखे? हम तो सरकार ऐसी चाहेंगे जो आम जनता का पूरा ख्याल रखे और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करे। सर, विकास की बात की जाए तो रायसेन क्षेत्र में पहले ये, अभी आप कौन कौन सी नई चीजें देखना चाहते हैं कि जो क्षेत्र में विकास के काम हो? जैसे रायसेन में विकास के काम में तो ऐसा है, कहीं कहीं जो विकास रह गया है, नालियां रही है, सड़क रही है, उनका विकास होगा, लाइट होगा, शहरी विकास अधिकरण के तहत जो सुंदरता है वो बढ़ाई जाएगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर शहरीकरण की बात की जाए, सुंदरता, यहाँ विकास के कार्य हों, और ये देख सकते हैं वो नजारा है। मैं आपको अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाइए, यहाँ पर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर अपने बखूबी ड्यूटी को अंजाम देते जा रहे हैं। कोई अरुणाचल प्रदेश से कोई यहाँ ड्यूटी करने आया, तो कोई झारखंड से ड्यूटी करने आया, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है कि शाम तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान यहाँ पर संपूर्ण हो चुके। वहीं मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, सबसे खास बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं की गई हैं। जागरूक करने के लिए, घर से निकलने के लिए मतदाताओं से कहा गया। सर, चूंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा था,
आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सबसे पहले कि अभी आपने जैसे एक नारा दिया कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। काम तो अमूमन हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन मतदान का पर्व हमारे 5 साल में एक बार मिलता है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता, युवा मतदाता, महिला मतदाता एवं बुजुर्ग मतदाता बढ़ चढ़कर जरूर भाग लें और अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान से ही हम अपनी देश की, अपनी मनपसंद की और अपने राज्य की सरकार चुनते हैं। और ये राज्य सरकार का चुनाव है जिसमें आप अपने मनपसंद विधायक को चुनेंगे और वो सरकार में जाएगा। निश्चित तौर पर जो हम चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं हो, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मिले, तो आपको सरकार चुनना होगी और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करना होगा। तो आपको अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिएगा। आम जनता जो वोट डाल के आ रहे हैं वो लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि कृपया घर से निकलिए और अपने मत का प्रयोग करें। ओके, ऑलराइट, थैंक यू अजय फॉर जॉइनिंग अस। हम आपके पास दोबारा आएंगे कुछ समय बाद। जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट इज विवेक तनखा of the Congress Party, Rajya Sabha MP Vivek Tankha with us this morning as Madhya Pradesh and Chhattisgarh go to vote. Vivek ji, first of all, what as per you have been the biggest failures of the Shivraj Singh Chauhan government? Anti-incumbency of 18 years is his biggest handicap. When you have been in power for 18 years, and it's very, very difficult to give results. India is a very aspirational country. There's too much of desire to do well. And if you see world over, Indians are doing so well. Maybe India is not doing as well. So this is a brilliant community. So young people want education. There's greed for education. That is why you find it's so difficult to get admission in professional colleges and good colleges, schools. I mean, in Delhi, if you can get your child admitted to a school, that's a huge victory. Yes. So, the biggest failure of Shivraj's government of 18 years is you could not understand the feelings of aspirational India. 65% of India is young, and the young people are looking for outlets. They're looking for good education, good health services, good infrastructure, good community, and with their exposure of the world view, they want their cities, their habitats to be as good or as bad as they see on television other countries. Okay. At the same time, Mr. Tankha, Congress has made the OBC quota the biggest poll promise. So do you think it's being criticized now as appeasement? How does the Congress party respond to that? Mr. Tankha, if you can hear me. This is a commitment that the Congress has given to the OBC, not today, but for the first time in 1994, based upon Mahajan Committee report, a commission that was constituted in the early 80s by Arjun Singh Ji. And the report was then implemented in 1994 as part of the Panchayati Raj Adhiniyam, the constitutional amendment and also the state amendments. So from 1994, in Madhya Pradesh, under Digvijay Singh's government, 27% reservation was available to OBC. So it's nothing new that the Congress has done. But when BJP came into power, for some reason this reservation was not defended. It got stayed by courts. Very less attempt was made by BJP to have the stay vacated. And for 18 years, virtually, the OBC section of Madhya Pradesh has been denied and deprived of the 27% reservation after BJP came into power. Right. And today is the same situation. It was only in the 18 months that the Congress was in power that they brought a law for 27% of OBC reservation. Okay. Before it was by rules. Now it came by way of law, a legislative action. And now that is under challenge. Even that has not been defended too well by the BJP commissioners, the senior-most ministers, the biggest business houses and businessmen of Europe, America, India, they're all there. So I find that if somebody like Kamal Nath ji
can actually be the Chief Minister of Madhya Pradesh, and we give him sufficient time to work for the state, there's a huge opportunity which awaits Madhya Pradesh because his contacts will do wonders for the state. Okay. All right, Mr. Thankar, thank you so much for joining us this morning with your perspective on the Madhya Pradesh polls. On that thought, I'm actually going to go back to Himanshu Bhatt. If I can, Himanshu Bhatt, you've heard the Congress party there rallying behind Kamal Nath. But I want to ask the same question for the BJP then. As per you, do you think Shivraj Singh Chauhan, if the BJP were to come back to power in Madhya Pradesh, is Shivraj Singh Chauhan then returning as Chief Minister? Because on that front, the BJP has laid a little bit low, and as we've heard earlier as well, that they want to focus on really fighting this election on Narendra Modi's name rather than a Shivraj Singh Chauhan. Yes, they decided to fight on Narendra Modi's name. That's all right. But then, Shivraj Singh Chauhan comes back or not is, I think, not important, according to me. For BJP, when you see this party's growth and when you see the trajectory and the way they have been performing in the last 9-10 years in the center and quite a few states in the country, you will understand one thing, that the decisive action generally is taken somewhere and then communicated to the states. This has been happening in Congress rule also for first 60 years. Let me tell you that. During the time of Indira Gandhi, whatever was done was taken, an decision was taken and then transmitted. And people acted accordingly. The same thing is happening here. So there's no difference here. But now the tussle here is, whether Shivraj Singh Chauhan wants to establish his son in the politics properly, Kamal Nath wants to establish, or Digvijay Singh wants to establish. See, this is where the issue is. And the cards which these people are playing very dangerously, all of them. On one side, you have somebody who is talking after 75 years of independence, when the writer of our constitution very clearly said there should be no reservation in this country after 60-65 years. Someone is talking of OBCs and STs and STs and caste-based reservation. That's on one side. On the other side, we are not giving up the religious politics. See, this is the clash of things where two lines of thinking are working parallelly. Now, what people will decide today, we are voting. By 3rd of December, we will know. Every party has a right, to boast of themselves. This has happened, that has happened. But actual case here is a voter turnout. At the end of the day, will decide what generally will give you an idea. What type of voter? I see so small sample survey size. It's not easy to say people are voting for that or people are voting for this. We have spent 35 years in journalism, and we know exactly what's happening on the ground. Okay, I'm going to leave the last word to KC Sharma, because at 9 a.m. we return with our focus on Chhattisgarh. KC Sharma, as far as Madhya Pradesh is concerned, same question to you. Of course, everybody is wondering, is Shivraj Singh Chauhan then returning as Chief Minister of Madhya Pradesh? Bharatiya Janata Party is going to return in a government for the sure. And I would like to also respond to the Honorable MP from the Congress. You were talking about the employment. I think he's an old person. He doesn't understand the modern employment. The modern employment are from the service sectors. And now you can see a lot of company into the Madhya Pradesh. These companies were not there when Congress was in a rule. And he was talking about the Kamal Nath ji, and he did not mention Kamal Nath ji was a part of the central government during the UPA. What he did for the Madhya Pradesh? Nothing. He was just with the Gandhi family. So he's the favorite of the Gandhi family. That's why everyone is trying to push Kamal Nath ji ahead. But Kamal Nath ji will make no difference. And Madhya Pradesh is doing well in all the sector. In farming sector, Madhya Pradesh is progressing better than other states, far better than other states. Everyone want to take the wheat from the Madhya Pradesh. They want to, because that is the quality products. And Madhya Pradesh doing good into the tourism. Madhya Pradesh doing good into the infrastructure. Madhya Pradesh progressing well into the service sector. And I'm sure Madhya Pradesh will become one of the top performing states in coming days or coming years.
because of the double engine Sarkar, and we are hopeful because of good work, good governance, good leaders, roadmap, vision, will come back. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.